take it. Sir, the women of this country have been starved of political power for decades, for centuries. There's a loaf of bread in front of us. We are saying we are starving. Share it with us. But the government is saying, no, you cannot disturb this loaf. We cannot touch it. Wait, we will bake a huge cake and then we'll bring it and then give you a small portion of that. Yes. How does it make any sense? And is this your civilizational commitment? The women of this country have been working hard all their lives. They protected their families, they protected this country, they've sacrificed for the nation. And yet, all their hard work goes unrecognized and not respected because you want to tie it with delimitation. Sir, my friends across the aisle will accuse me of creating fear. But the real dangers of this bill are that our Constitution and Article 368 requires 2/3 majority in Parliament to amend it. 2/3. That's not a small number. It was designed to ensure that no single region, no single language group, no single community could change the fundamental rules of India without broad consent from across this great nation. But what happens after this delimitation? Right now, in this House, we have 543 MPs. 2/3 majority is 362. Let us say the seats are increased to a maximum of 850 MPs as per the Home Minister's assurance, 50% increase across the states. Then the total number of seats would be around 816. Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Uttarakhand, Chhattisgarh, Jharkhand, these states together will hold somewhere between 400 to 420 seats in an expanded 816-seat Lok Sabha. 2/3 threshold in an 816-seat House is 544 seats. Add the smaller BJP-aligned states like Gujarat, Himachal, or whatever, and the arithmetic becomes terrifyingly clear. The heartland can approach a constitutional amendment majority without a single vote from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Punjab, Andhra, Telangana, West Bengal, or the Northeast. So this is your plan. The collective bargaining power of the southern states will be effectively reduced. Their voices are not even required for fundamental changes in the Constitution. This will create an environment where the policies of the union government will be pushed down on the people who believe that this nation should remain a secular democracy. This bill looks like a prelude and a facilitator for your future agendas. And moreover, the southern states will stand to lose out on the president's election as well. Article 55 governs presidential election vote values. Changing population definition here will alter the vote value of each MLA and MP in presidential elections, giving more electoral weight to MLAs from states that gain seats through delimitation. Directly affects the federal balance in the presidential polls. This bill, sir, is ambiguous in the least, misleading, and it has no clarity or purpose. Let us see an illustration through the Tamil Nadu share of seats in Lok Sabha. At present, we have 39 seats. As per these bills, which say 2011 census will be followed, it will become 32 seats, given there is no change to the 543 seats. If the maximum seats are increased to 850, as the Home Minister told us yesterday, Tamil Nadu will gain 48 seats. But if the seats are increased, if the seats are increased to 50% across the states, as Home Minister says, it will get around 59 seats. Now I ask the Home Minister, which of the above scenario will happen? Whether 2011 census or it will be just increased based on 2011 census or what the Home Minister said. These are three different numbers. I would like to know, we like to have a clarity on which will happen. We want, and sir,
we have seen in this House, in many debates, many promises have been made, many assurances have been given. And all that has melted into the polluted air of Delhi. Nothing has seen the light of the day. Sir, we request you to bring it into and make it a part of the bill, whatever assurance it is. And data says that this government, nearly 80 to 90% of the assurances given by this government in the floor of the House are never seen through. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has built a joint action committee of democratic parties and state governments to fight this delimitation. We have held all-party meetings in Chennai. We've passed resolutions. We have written to the Prime Minister. We have demanded that Parliament not rush these bills through in a special session called without adequate notice, without standing committee examination, without even the courtesy of consulting the states whose future is being decided. The Prime Minister has not met us. The government has not convened a meeting in the National Development Council. The Interstate Council, which exists exactly for this reason, has not been convened. Instead, they called a special session of Parliament and scheduled these bills for passage in a matter of few days. Sir, this is not cooperative federalism. This is just calculative politics. In S.R. Bommai and versus Union of India 1994, the Supreme Court has stated that states have an independent constitutional existence and they have as important role to play in the political, social, educational and cultural life of the people of the Union. They are neither satellites nor agents of the center. In the Rameshwar Prasad versus Union of India 2006, the Supreme Court held that the basic principles of federalism is that the legislative executive authority is partitioned between the center and the states, not by any law to be made by the center, but by the Constitution itself. That is what the Constitution does. The states under our Constitution are in no way dependent upon the center for their legislative or executive authority. The center and the states are co-equal in this matter. Unfortunately, this government does not recognize the rights of the states. It simply thinks we are here to serve the masters in Delhi according to their diktat. The DMK is not here merely to oppose. We are here to govern, to protect and to propose. The Tamil Nadu and the DMK demand this government should implement the women's third reservation bill immediately in the existing 543-seat Lok Sabha through rotational reservation, de-link it completely from delimitation exercise. Then we can support this bill. The women of India should not be made to wait for a delimitation exercise that serves the BJP's political interests. Withdraw these three bills immediately and refer them to a joint parliamentary committee that includes representation from all states and all parties. Do not rush a 25-year electoral map through a special session in 48 hours. Convene a constitutional conference of all state chief ministers to deliberate on the delimitation framework before any legislation is enacted. India deserves that consultation. And our chief minister, our party president, sir, yesterday has promised the people of Tamil Nadu that not one seat will be lost on his watch. And yesterday, when the DMK floor leader mentioned in Parliament that our leader, M.K. Stalin, hoisted a black flag, you dismissed it by saying that black flag or blue flag does not matter. You brushed it aside. Yes, sir, you brushed it aside by saying a black flag or a blue flag does not matter. A black flag is a sign of protest. Yes. A sign to say we will stand up and fight and we shall not give up. Yes. And I like to remind you that a blue flag, sir, is the color Dr. Baba Sahib Ambedkar chose for his party flag.
It is the same blue color which you dismiss, that the man who taught us that we should educate, agitate and organize, the man who wrote the Constitution, chose for his flag this very Constitution you are trying to dilute, and we here are trying to protect. And sir, and the Prime Minister yesterday, when he saw us in black, he said that he was reminded of a black dot or tiki or tika, what? Tika. Yeah, and it is there to drive away evil forces. Evil eye or evil forces or whatever. Yeah. Sir, I am surprised that people here who are there to protect Hindutva were not reminded of Kali, the goddess, the dark goddess who wears black. Yes. The feminine power, the woman, the goddess who is supposed to drive away ego, arrogance and ignorance. And the same black color we have chosen to protest is the color of Periyar. Our intellectual leader. He taught us self-respect. He taught us never to bow. He taught us fight till the end. And we will fight till the end. Sir, we oppose these bills in the name of our leaders, Aringer Anna, Kalangar Karunanidhi, who said, states are not a unit of the unitary state, but equal partners of a federation. In the name of our Chief Minister, M.K. Muthuvel Karunanidhi Stalin, who even in an article today has said that this bill should be withdrawn. A fresh bill should be introduced and placed in public domain at least for 3 months for wider consultation. He says, the moment, not expediency, deliberation, not haste. If the Constitution is to endure as a charter of trust, its amendment must be guided by principle, anchored by fairness, restraint and fidelity to the Republic's enduring integrity. Tamil Nadu போராடும், Tamil Nadu வெல்லும். நன்றி, வணக்கம். Dr. Shashi Tharoor. Thank you very much, Mr. Speaker. I must say that we all strongly endorse the very impressive presentation by the Speaker before me, sir, because this is a matter that touches the very soul of our democracy, the representation of half of our population in the hallowed halls of our parliament. And for decades, the Women's Reservation Bill has been long promised, frequently discussed, perpetually delayed, like waiting for Godot of our political system. Today, we stand at a threshold where there is remarkably a near unanimous political consensus in favor of women's reservation. Every major party in this House recognizes that the time for tokenism is over and the era of equal partnership must begin. And yet I'm finding myself deeply perturbed by the legislative exercise before us. The Prime Minister says the government has brought Nari Shakti, a gift of justice, but he has wrapped it in barbed wire, tethering the implementation of women's reservation to the expansion of Parliament, to numbers from the 2011 census, and an exercise of delimitation. Why, Mr. Speaker, why must we entangle a moral imperative with a demographic minefield? Women's reservation is ready for harvest. खेत की फसल काटने के लिए तैयार है दोस्तों. It can and should be implemented immediately based on our existing parliamentary strength. To link it to delimitation is to hold the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious and complex administrative exercises in our nation's history. Sir, delimitation is not a mere bureaucratic rearranging of maps. It is a profound shift in political power that is intended. Linking women's reservation to it effectively holds the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious political exercises in our history. Such an exercise, sir, carries risks that could strain the very fabric of our federalism, as you heard from the previous speaker. Any delimitation exercise is fraught with complications that could tear at the very fabric of our federalism.
We must be candid about what is at stake when constituencies are redrawn based on either current population figures or even the 2011 census. Let's face it, sir, delimitation requires serious discussion. We face a profound demographic divergence. There are at least three major fault lines in our country, sir. First, the balance between small states and big states. Second, the balance between states, particularly in the south like Tamil Nadu or Kerala, which have diligently implemented national goals of population control and invested in inclusive human development, and those states, mainly in the north, who have not. Yet in future delimitations, states that have failed to curb population growth would be rewarded with greater political weight, and we must ask if this is the message we wish to send, that governance excellence leads to political irrelevance. Third factor, sir, the balance between the states that are the engines of our economy, contributing more to the national exchequer than they receive, and those that are net recipients of central funds. A delimitation based purely on population would further marginalize the voices of those states that provide the lion's share of resources that keeps our union afloat. We risk creating a tyranny of the demographic majority, where a handful of large, poor states could theoretically determine the fate of the entire country, leaving smaller states and those with distinct linguistic and cultural identities and economic contributions feeling like bystanders in their own country. Conversely, states with high population growth but lower economic productivity could gain outsized political power without corresponding fiscal responsibility. What happens, sir, to cooperative federalism? You have proposed delimitation with such haste, the same haste that you showed on demonetization. And unfortunately, we all know what damage that did to the country. Delimitation, sir, will turn out to be political demonetization. Don't do it, sir. Now, I want to say the 50% formula that suddenly the Home Minister came and presented to us yesterday regarding the delimitation exercise, promising that no state will lose its current number of seats, total House strength will increase by 50%. This remains a precarious political assurance and not a legislative certainty, because the pledge is fundamentally contradicted by the existing text of the legislation itself, which gives total freedom to the Delimitation Commission appointed by the government, whose decisions cannot be challenged in a court of law. Since this formula, what Shri Amit Shah said, is not codified as an immutable constitutional or legislative safeguard, it could be easily discarded or altered by a simple parliamentary majority, offering no guarantee that it will survive beyond the very short term. Furthermore, expanding the Lok Sabha to an 850-member House would create the legislature that is by far the largest in any democracy in the world, resulting in a body that will be unwieldy and unworkable. This is especially true, sir, in an era where the government has been systematically reducing the duration of parliament sittings. Whereas the first and second Lok Sabhas met for an average of 125 days a year, the 16th and 17th Lok Sabhas saw that figure plummet to just below 60 days, sir. In such a constrained schedule, what will your job be, sir? An 850-member chamber would require at least a doubling of the time currently allotted to question hour, 0 hour, for a majority of MPs. मेरे कार्यकाल में होगा तो सबको मौका दे दूंगा. Sir, for a majority. देर रात कल भी इसी महिला संशोधन बिल पर रात को 1:25 तक सभी महिला सदस्यों को मौका दिया, सबको. देखिए, लेकिन ये भी आपके बारे में भी चिंता है, सर. और for a majority of MPs to have any chance of meaningful participation, you'll have to double the time allotted to question hour and 0 hour, failing which a majority of representatives would be effectively silenced, sir. How will you manage to give 850 MPs a chance to speak? As it is with 543, many of us don't get questions. देखो, You are saying no whenever we ask for the floor. शशि थरूर जी, मैं रोकना नहीं चाहता, लेकिन इस सदन में कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकता कि मैं किसी को बोलने का मौका नहीं देता, चाहे शून्यकाल हो, चाहे विधेयक हो.
जितनी देर बोलने देना चाहता है सबको बोलने था, और अंतिम रात को अंतिम रूप से मैं लास्ट में रहता हूँ कि कोई बाकी रह गया हो तो भी और बुला देता हूँ। 850 होते हैं, 850 होते हैं, तो आपका हाल क्या होगा मुझे पता नहीं। Anyway, another concern, sir. नहीं राजा जी फर्स्ट टाइमर को विशेष रूप से बोलने का मौका देता हूं। कोई फर्स्ट टाइमर ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे बोलने का मौका नहीं। Sir, let me continue, sir. Another concern is while the size of the Lok Sabha is being expanded in the government's proposal, प्रकाश जी देते हैं ना मौका। there is no corresponding proposal to increase the strength of the Rajya Sabha. Raises a serious structural concern, sir. This alters the relative balance between the two houses. In the event of a joint sitting, the significantly larger Lok Sabha would dominate the voting process, and the imbalance would also extend to the elections of president and vice president, where each MP casts an equal vote. So we are amplifying our own house and our own weight without, unfortunately, giving any heed to our colleagues in the upper house. And you can imagine, if the upper house is the chamber of states, then you can understand the concern of states that their weightage is not being respected, sir. Now, these are all problems, Mr. Speaker, that cannot be solved by a simple calculator. They require a great compromise. A historic settlement is needed in our country that ensures that no region feels diminished. And, sir, even though one of the BJP speakers had criticized me for making some suggestions from international examples, let me say there is no harm in looking to international examples where diverse unions have grappled with this exact tension. In 1787, the American framers, for example, faced a deadlock between large and small states. And so they led to what was called the Connecticut Compromise, where their solution was a bicameral legislature, a House of Representatives based on population, and a Senate where every state, regardless of size, has exactly 2 seats. So you may be a tiny state like Goa or Sikkim, and you might be a gigantic state like UP, you'd have the same number of seats in the upper house. That's one idea. I'm not saying we should adopt it, but we should discuss it. Another idea, say the European Parliament. They use a system of principle of digressive proportionality, where larger seats do have more seats than smaller ones. So larger states will have more MPs, but smaller states are given more seats than a strict population ratio would justify. So it is true that in Europe, in the European Parliament, a Maltese MP will represent only 80,000 people. A German MP will represent 8 lakh people. But it doesn't matter, they stay united. So we need to consider these options. We are a union of states, sir. And the whole idea is we want to create a formula in a serious delimitation discussion where the smallest members of our country and our polity still have a voice loud enough to be heard. These models teach us that in a complex union, the principle of one person, one vote, one value, which has been cited by the ruling party, must be balanced with the principle of one state, one equal partner, one value in a country like ours. As India approaches a new delimitation exercise, sir, the constitutional question is whether the spirit of cooperative federalism can be preserved through a model that respects demographic reality while preventing structural domination by a few large Hindi-speaking states. Digressive proportionality would not violate constitutional democracy. It would operationalize the Constitution's deeper commitment to the Indian principle of balancing unity with diversity. Sir, सीमांकन से जुड़े मुद्दों पर सभी हितधारकों, सभी राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है, सर। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और ना ही इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लागू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार देश के निर्वाचन मानचित्र को पर्याप्त विचार विमर्श और व्यापक परामर्श के बिना क्यों पुनर्निर्धारित करना चाहेगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। I urge the government, therefore, to decouple these issues. Pass the Women's Reservation Bill today, we will support it. The Prime Minister spoke with passion about Nari Shakti. Let it take effect already in the next general election.
using our current seat count. Show the women of India that your commitment is not a mere rhetorical flourish. As for delimitation, sir, let us defer it. Let us constitute a formal mechanism, perhaps a JPC, sir, to debate a new federal settlement that protects the interests of all states. Let us ensure that a march towards a new India does not give us a disunited India. Let us not leave our most successful states behind. Bharatiya Ekta ke liye hame kaam karna chahiye, sir. Let us give women their due now. Mahilaon ko Nari Shakti hi de de, or give our nation, our union of states, the time it needs to solve its demographic challenges with wisdom and not just arithmetic. बस मैं यही कहना चाहता था संक्षिप्त में, sir. Thank you very much for listening to me. It's a plea to the government. Please, please be sensible about the larger interests of the country and not the short-term interests of the ruling party. Jai Hind, sir. Shri P.V. Mithun Reddy. Thank you, ma'am. Yesterday we heard the Home Minister speak in the evening. He was saying about, he spoke about a proportionate increase of seats for, based on the existing number of seats what every state has. So we welcome this, but we have concerns. Madam, we have concerns because a mere oral commitment is not enough. I will tell you an example also. On this very floor of the House during the partition of the state, both the Congress and BJP promised us, the then Prime Minister himself promised us special category status for the state. It was an oral promise and it was not kept up. So we demand that it be, whatever commitment was given yesterday evening be incorporated in the bill. Yes. I will tell you a reason also. One of the amendment passed by Sri OICG carries the same content. If that amendment is accepted, the same thing whatever the Honorable Home Minister has promised in the floor of the House will be incorporated into the bill. So we demand that it be put, whatever promise was given may be part of the bill. And a lot of members spoke about regional imbalances. So in a way we are addressing the regional imbalances of the country, but the regional imbalances of the states also should be taken into consideration. Each state has various regions, and after the delimitation process, regional imbalances should not arise in every state. This is a very important aspect. Whatever yardstick you have taken for considering increase of seats in the country should be also applied for the state also. No regional imbalance should be should occur in the states also. And there is one more condition in the delimitation committee which says that 5 members, associate members will be picked up from the parliament and 5 from the state. Madam, we have a doubt. What if the state speaker does not give the opposition parties even 1 member? So fair representation should be there for all the parties, be it the ruling or the opposition. So we demand that this also be incorporated in the bill. So some comfort should be given regarding this. And overall, this delimitation process should be a national building process. It should not be such that it should not be a tool to crush the opposition. And regarding women reservation, our party and our leader has always advocated empowering of women. So we welcome the women reservation bill in any form, any time. Madam, I would like to recall as a Chief Minister what Mr. Y.S. Jagannath Reddy did in our state. He gave 50% reservation for women in all the local bodies. He gave 50% reservation for women in all the nominated works. He also gave maximum importance for women in all the social welfare schemes. He proposed, all the 32 lakh outside patas what we have given in the state were registered in the name of women, and all the social welfare schemes were given through the women. Madam, we demand strict and stringent laws for safeguarding the protection, safeguarding the women's security also. Madam, one of the Telugu MP spoke yesterday regarding protection for women in the state. So I will also add upon this. Recently, Madam, 4 MLAs were caught videotaped, audio taped in Andhra Pradesh harassing women on the, they made video calls and harassed women. 4 MLAs were caught. This is not just one vague allegation. If you just type harassment by Andhra Pradesh ruling MLAs on women,
You will get all the videos, but I have to pass a advisory also. Open it at your own risk. These are filthy and real horrible. But what happened is that the women who complained, who gathered the courage to complain, were harassed and targeted, madam. None of the MLAs, no action was taken. So we demand stringent laws. We demand that, be it anybody, we demand all the MLAs be taken to task. So apart from empowering women, we demand that strict laws be there to protect women also. In principle, we support this bill and we demand the government to consider all our concerns. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन जी। महोदया, आज सदन के सामने एक संविधान संशोधन विधेयक और 2 विधेयक विचार के लिए रखे हुए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है। मैं इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक पहल जो ये 3 विधेयक ला के उन्होंने सदन में किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं और मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। महोदया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुरू से, प्रारंभ से, माननीय सदस्य सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्यगण प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्य इस तरफ भी प्लीज। माननीय महोदया, कंटिन्यू। महोदया, प्रधानमंत्री जी का शुरू से, प्रारंभ से एक विजन रहा है और वो विजन रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज जो ये 3 विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और 2 विधेयक जो सदन में लाए गए हैं, वो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख के लाया गया है। महोदया, 50% महिलाओं की आबादी है और अगर 50% आबादी के प्रति न्याय नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो उनका ये विजन पूर्ण नहीं होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह लाया है। आज इसलिए लाया है उन्होंने कि जो कानून बनाने में आज पंचायतों में है, पंचायतों में 33% आरक्षण था, कई राज्यों ने 50% आरक्षण किया, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा और सारे गांव में इस बात की चर्चा है कि मैं पंचायतों में तो वर्षों से शासन चला रही हूं। इस देश का कानून बनाने में, राज्य के कानून बनाने में मेरी भागीदारी कब होगी? और इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन 50% महिलाओं के प्रति न्याय किया है और न्याय करके यह बिल लाने का काम उन्होंने किया। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनको कानून बनाने में सहभागिता उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। महोदया, प्रधानमंत्री जी ने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में 2 ऐतिहासिक कदम उठाए। पहला ऐतिहासिक कदम उठाया उन्होंने 2023 में। 2023 में जब उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मनसा इस देश के मातृत्व शक्ति के प्रति स्पष्ट कर दी कि मेरी मनसा है कि आप संसद में और विधानसभा में भी आपकी 33% भागीदारी सुनिश्चित हो। ये उन्होंने लागू करने का काम किया। तो दूसरा पहल, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दूसरा पहल आज का पहल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको सरजमीन पर उतारने के लिए, उसको सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का काम किया है।
उनका प्रयास है ये, उनकी सोच है ये कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें 33% महिलाएं इस सदन के सदस्य बने। और आप कल्पना कर सकती हैं महोदया, आप कल्पना कर सकती हैं कि 19वीं लोकसभा का परिदृश्य क्या होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में 33% महिलाएं आके बैठी हैं और वो उसकी भागीदार हैं। सरकार के कामकाज में वो भागीदार हैं, सरकार में उनकी सहभागिता है। यह काम ऐतिहासिक करने का काम उन्होंने किया और इसलिए और इसी को ध्यान में रख के उन्होंने परिसीमन आयोग बनाने के लिए भी अधिनियम लाया। अब परिसीमन आयोग का क्या काम है? परिसीमन आयोग का काम है कि देश की आबादी के आधार पर विधानसभाओं में 50% सीट बढ़ा दी जाए। 50% अगर सीट बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर लोकसभा में भी सीटें बढ़ जाएगी और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसमें कौन सा गुनाह है? इसमें कौन सी है? 2011 का सेंसस हो या 2023 का सेंसस हो, 26 का सेंसस हो, इसमें क्या अंतर पड़ना है? महिलाएं तो महिलाएं हैं, महिला एक समाज है और वो महिलाएं चाहे जिस वर्ग की महिला हो, महिला है। और महिलाओं के साथ न्याय में ये आनाकानी और जो रास्ता खोजने का काम किया जा रहा है, महिला विरोधी होने के लिए जो रास्ता खोजने का काम रहा है, उसका इस देश की महिलाएं उसका समर्थन कभी नहीं करेंगी। इस देश की महिलाएं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी सचेत किया है, आपको बता देंगे, अभी ठहर जाइए थोड़ी ना, अभी अखिलेश जी को बताते हैं। तो इसलिए ये आ रहा है, अब विधानसभाओं में सीटें बढ़ेगी, लोकसभा में भी सीटें बढ़ेगी, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कल देख रहा था, मैं कल सुन रहा था कि माननीय सदस्य प्रियंका जी अभी किरण रिजिजू जी चले गए, नहीं तो और मेघवाल साहब हैं, किरण रिजिजू जी जा रहे हैं, हम उन्हीं को एक कोट करके उनको वो साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कल भाषण दिया, उनका भाषण हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। पहली बात उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में क्यों लाई गई। 50% महिलाओं को आरक्षण देना जल्दीबाजी का कदम नहीं हो सकता है। 50% उनकी आबादी है और 50% उनकी आबादी है तो और उनको कानून में और संसद में, विधानसभाओं में बैठने का हक देने का अगर कोई कानून लाया है प्रधानमंत्री जी ने, तो वो जल्दीबाजी का कानून नहीं है। 2023 में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और आज 2026 है। 3 साल के बाद उसकी पूरी तैयारी करके और पूरे सोच समझकर यह बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। अरे हम सबको मालूम है, इस पूरे देश को मालूम है कि किसी भी परिवर्तन को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन को आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं। आपकी मंशा बहुत साफ है, इसलिए आपने ये बात कही। अब ये बात अगर कांग्रेस का कोई दूसरा सदस्य कहता तो मुझको लगता कि चलिए भाई अनजाने में कह दिया हो, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में श्रीमती प्रियंका गांधी जब ये बोल रही है सदन में कि हम इसको कभी नहीं लागू होने देंगे, तो मुझको आश्चर्य हुआ इस बात का कि ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी राजनीति है। ये उनकी रणनीति है कि कोई भी ऐतिहासिक कदम जो इस देश में क्रांति, जो सामाजिक क्रांति लाने वाला कदम है, उसका समर्थन कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। यह उनकी मंशा स्पष्ट करती है। उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। अखबारों में खबर छपती रही, अखबारों में खबर सुनते रहे और एक बैग सदन के में बिल लेके आ गए। अर्जुन मेघवाल जी, किरण रिजिजू जी चले गए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं।
संसदीय कार्य मंत्री वो भी हैं, वो बताएं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कि नहीं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं हुआ, बैठक में शामिल नहीं हुआ, बार बार आग्रह करने के बावजूद। आपकी मंशा तो पहले से स्पष्ट थी, आपकी मंशा तो दिख रही थी कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। आप कोई भी सामाजिक क्रांति के कदम को समर्थन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है। अरे भाई, अगर मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है और इस देश की जनता को पसंद आ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? देश की जनता के साथ जुड़ जाइए और मोदी जी के चेहरा को न चाहते हुए भी कहिए कि वाह बहुत अच्छा है। तो ये काम तो करिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा कि यह संविधान संशोधन अगर पास होगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। क्या लोकतंत्र की परिभाषा बता रही हैं? अगर 50% आबादी संसद में बैठेगी तो लोकतंत्र कहां से समाप्त हो जाएगा? अरे लोकतंत्र समाप्त करने का प्रयास तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार किया था, जो इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को नस्ताबूद कर देने का काम किया। इस देश में, इस देश के लोकतंत्र की जड़ इतनी मजबूत है कि कोई चाह के भी इस देश के लोकतंत्र को समाप्त नहीं कर सकता है। इस गलतफहमी में नहीं दीजिए। तो सभी उनके जो तर्क थे, कल मैंने सुना बहुत विस्तार से उनका भाषण, थोड़ी मीठी आवाज में बोलती हैं। अभी नहीं हुआ है खत्म मैडम, इतना जल्दी मुड़ी मत हिलाइए, अभी समय बचा हुआ है बहुत कुछ। तो इसलिए कोई तथ्य नहीं है। अब कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, आप लोगों ने भी सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है कि अगर आपने इसका विरोध किया तो बरसों तक इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने आपको सचेत किया है, लेकिन फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं तो अलग बात है। मैं उनको एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। पंचायतों में 33% का आरक्षण लागू था। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और 2006 में उन्होंने कहा कि 33% हम नहीं मानते हैं। हम इस देश में महिलाओं की आबादी और इस राज्य में महिलाओं की आबादी 50% है। हम 50% पंचायती राज व्यवस्था में नगर निकाय में आरक्षण देंगे। और सिर्फ उन्होंने पंचायतों में और नगर निकाय में आरक्षण नहीं दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एकल पद जो प्रमुख का पद होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष का पद होता है, सरपंच का पद होता है, उस पर भी आरक्षण उन्होंने दिया। लालू प्रसाद जी उसमें विरोध में थे, एनडीए की सरकार थी। लालू प्रसाद जी ने उस नीतीश जी के फॉर्मूले का विरोध किया और आज तक उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज तक बिहार की जन एनडीए, मैंने देखा है बिहार के एनडीए के साथ वहां की महिलाएं 100% खड़ी होती हैं। आप इस बार के चुनाव का वोट निकाल के देख लीजिए। अखिलेश जी, हम आपको कहेंगे, मेरे मित्र हैं, उनसे सचेत रहिए, उनके चक्कर में मत पड़िए, उनके चक्कर में पड़ के वो गायब हो चुके हैं। इस बार के विधानसभा के चुनाव का आप रिजल्ट देखिए। 84 ऐसी सीट है जिसमें पुरुषों से 10% ज्यादा महिलाओं का वोट गिरा है और एनडीए के पक्ष में गिरा है। ऐसा क्यों अन्याय कर रही हैं आप मैडम? अन्याय मत करिए, आप ऐसा अन्याय मत करिए। मेघवाल जी कह रहे हैं कि कुछ उनकी पार्टी का टाइम दे दीजिए इधर। बोलिए मेघवाल जी। अब 2023 से मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उस समय से इस देश की मातृत्व शक्ति इंतजार कर रही है कि मुझको कब मौका मिलेगा। और जब प्रधानमंत्री जी ने आज उनको मौका दिया तो आप विरोध में खड़े हो गए। अरे ऐसा क्या है? और आज जो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में जो बिल लाया है उनके नेतृत्व की सरकार ने, वो उसी भावना को जो मातृत्व शक्ति 2023 से इंतजार कर रही है, उसकी उस भावना के अनुरूप, उसकी भावना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इस संविधान संशोधन विधेयक को लाया है इस सदन में। और इसलिए हम विपक्ष से अपील करेंगे, हठ धर्मिता छोड़ दीजिए, हठ धर्मी मत बनिए, रास्ता मत खोजिए, इधर उधर बाएं दाएं जाने का रास्ता मत खोजिए। अगर आपने विरोध किया तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सच कहा है। अगले 20-25 वर्षों तक आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे लालू प्रसाद जी 2005 से 2026 तक खामियाजा भुगत रहे हैं। और आप क्या बात करिएगा? कल प्रियंका जी बोल रही थी, आपने क्यों नहीं पास कराया? अरे प्रियंका जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस सदन में 4 बार यह प्रयास किया कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो। आप विपक्ष में थे, आपने समर्थन नहीं किया और उसके कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। तो इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, इस चक्कर में मत पड़िए, उनसे झटका मारिए। और अगर उनके साथ सटे रहिएगा तो बिहार में इनका क्या हाल हुआ है मालूम है ना? 27 से 19 से 6, और उस 6 में भी 3 गो बाहर निकल गया है, अभी 3 गो बचे हैं। तो इसलिए इनका हसरोई होने वाला है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का और जो अन्य विधेयक आए हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 50% की आबादी के साथ न्याय करने का काम किया। ये इनको अगर भगवान सुबुद्धि दे, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको सुबुद्धि दीजिए ताकि जो आने वाले दंश हैं वर्षों तक उससे ये बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। Thank you, the Honorable Chairperson. We are opposing the entire 3 bills, and the reasons which I will speak later on. Madam, our Prime Minister has having a great quality. The quality is, the moment he understands that next election he is going to lose the election, he changed the रूल्स ऑफ गेम। इलेक्शन में हार जाएगा तो चलो, गेम को रूल जो है उसको चेंज कर दो, और चेंज करने के लिए रूल गेम को यही लिया है। इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक, नथिंग मोर देन दैट। द प्रेजेंट बिल्स आर अंडर डिस्कशन आर प्रोडक्ट ऑफ सच थॉट्स। मैडम, द प्लॉय ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन, व्हाट दे आर सेइंग, वुमेन, दिस अ प्लॉय। ओरिजिनल प्लान इज समथिंग डिफरेंट। That is delimitation, that is seat adjustment, that is the original plan. थोड़ा सेंटीमेंट लगा दो भाई, थोड़ा सेंटीमेंट वुमेन का लगा दो। इस वुमेन का सेंटीमेंट लेके हमको तो डिलिमिटेशन पास करना होगा। सीट बढ़ा दो, रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, आज पूरा आप लोग ले आइए। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर। उसको लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है। नाटंकी बंद कीजिए, बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। हम लोग सब राजी है, कर दीजिए ना। हिम्मत नहीं है आपको, हिम्मत नहीं है। आप जानते हैं हम आंकड़ा बोलेंगे आपको। आप लोग करना नहीं चाहते, आप लोग पार्टी में भी नहीं किया है, आप लोग क्या करेंगे?
अरे सुनिए, आपको पार्टी का बात सुनिए, आपको पार्टी का थोड़ा आंकड़ा हम दे देते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आप लोग कितना कॉन्शियस अबाउट दी वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन सुन लीजिए, आपको पार्टी में बीजेपी के में लोकसभा में टोटल एमपी है 240, फीमेल कितना है 31, परसेंटेज कितना 12.91%। राज्यसभा में आपको कितना है 106, वुमेन कितना है 18, परसेंटेज क्या है 16.98। अब तो आपको पार्टी में आपको महिला का सम्मान नहीं देते हैं, अब तो आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं, और इधर आके बड़ा बड़ा बात करते हैं महाशक्ति, आद्या शक्ति, आशक्ति। अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर, हाँ। और टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे, सुन लीजिए एआईटीसी, लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, परसेंटेज इज 39.28%। Not a single party in India has given it. राज्यसभा में 39 member, 6 is the female, percentage is 46.15%. We do it. Charity begins at home. Do it. इतना आद्या शक्ति का क्षमता है तो 2027 में 27 में उत्तर प्रदेश में 50% कैंडिडेट करिए वुमेन को, तब ना देखेंगे। So, madam, I was reading and I was really surprised. This is our country. Is it our country? Never you did it. I will read the constitutional provisions also. Do you know how many women voting percentage in the country? Women voting percentage in this country is 65.78%. ये सरकार सब चल रहा है ना,